आप सभी रेडियो रिसर्च सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं सन्यासी मंत्र निधि आपके सामने संपूर्ण सौंदर्य लहरी पाठ को उपस्थित कर रही हूँ। शायद आपको ईश्वर की कृपा से पसंद आ जाए। श्री सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित देवी जी का गुप्त शक्ति का वर्णन है, जो पुरुष या स्त्री प्रत्येक दिन नियमित पाठ करते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह 103 श्लोक का पुस्तक है। इसका पाठ 5, 9, 11 या 13 श्लोक प्रत्येक दिन कर सकते हैं। अगर समय है तो संपूर्ण पाठ भी अनिवार्य है। पाठ शुरू करने से पहले 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण के साथ 25वां श्लोक जो संपूर्ण मंत्र है, इसको प्रथम श्लोक से पहले करना है और अंत में भी उपरोक्त संपूर्ण मंत्र को करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता। तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन् मुकुलितकरोतं समुकुटा। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृतपुण्यः प्रभवति। तनीयान् सम्पांसुं तव चरणपङ्के रुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलं। वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसा। हरः संच्छुदेनं भजति भसितो दूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनकरी जडानां चैतन्यस्तव कमकरन्द श्रुतिझरी। दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलधौ। निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुबराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः। त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं। शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनो। हरिस्त्वाम् आराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननीं। पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेवेन वपुषा। मुनीनामाप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं। पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेवेन वपुषा। मुनीनामाप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। धनु पौष्पं मौर्वी
मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथ तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तनभरा परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्वाणान् पांसं श्रेणीमपि दधाना करतले पुरस्तादास्तां नः पुरमतितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं महिं मूलाधारे कमपि मणिपुरे उतबहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारे चरणयुगलान्तर्विगलिते प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमहसः अवाप्य स्वां भूमिं पूजगनिव मध्योष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठे शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रविन्नाभिः शम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाश्रतिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव चरणकोणा परिणता त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोक्योत्सुक्या दमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीं नरं वरसीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धा कुचकलशविस्त्रस्तसिचया हठात् त्रुट्यत्काञ्चो विगलितदुकूला युवतयः छितौ खट्पञ्चाशद्विषमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे द्वाषष्टि चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन् मनसि च चतुःषष्टिरितिये मयूखास्ते साम्य उपरि तव पादाम्बुजयुगां शरज्योत्स्ना शुभ्रां शशियुतजटाजूटमुकुटां वरत्रासत्राण
स्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृन्न त्वां नोत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरिणा भणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनवालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतिं विरिञ्चि प्रेयस्या स्तरलतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सभारञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिसुभगे वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरे तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणी श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामूर्वी मरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रयस्य द्वनहर्णशालीननयना सहोर्वस्यावस्या कति न गीर्वाणगणिका मुखं विन्दुं कृत्वा उच्चयुगमधस्तस्य तदधो हकारार्धं ध्याये द्वरमहिषिते मन्मथकलां ससद्दः संक्षोभं नयति वनितायेत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बमृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव जरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधासारसिरया तटिल्लेखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं निषन्नां सन्नामाप्योपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परम आह्लादलहरीं भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदेव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमुकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं बपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमतिशङ्के हृतमभूत् तथा हि त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामालम्ब्रं कुटिलशशिचूडालमुकुटं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतद् स्वमपि वपुरी सस्थिरयति सदा पूर्व सर्वं
तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तव आज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन् मुकुलितकरोतं समुकुटा विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं वितन्द्रा माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलति दृशां महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति तत्पतिरसो जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचनं गतिः प्रादक्षिण्यं भ्रमणमसनाद्याहुतिविधि प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु जन्मे विलसितं ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमासानुसदृशिम् अमन्दं सौन्दर्यं प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तव कसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मजीवः करणचरणे खच्चरणतां सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामेर्तुहरणिं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः करालं यच्छ्वेलं कवलितवतः कालकलना न सम्भोस्तन्मूलं जननि तव ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते चतुःषष्ट्यातन्त्रे सकलमविसन्धाय भुवनं स्थित तत्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रे पशुपति पुनस्त्वन्निर्बन्धा दखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवाति तरदिदं शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथरविः शीतकिरणा स्मरो हंसशक्र तदनु च परामारहरयः अमीरिलेखाभिस्ते शिविरुवसाने सुघटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामा वयवतां स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमाद्ये तव मनः निधायेके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका जपन्ति त्वां चिन्ता मणिगुणनिबद्ध्वा छवलया शिवाग्नो जूयन्तः सुरविकृतधाराहुतिसते शरीरं तं शम्भो शशिमिहिरवक्षो रुहयुगं
तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषी तयमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमि त्वयि परिणतायां न हि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं हरमहिषि भावेन बिभृशे तव आज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति भालोकभवने विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवे सेवे देवी मपि शिवसमानव्यसनिनीं ययो कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारोप्य शरणिं विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलसंवित् कमलमकरन्दकरसिकं भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापदष्टा दशगुणितविद्या परिणते यदा दत्ते दोषा गणमखिलमध्यपयैव तव स्वाधिष्ठाने उत बहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवरतं जननि महतिं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिले दयाद्राया दृष्टि शिशिरमुपचारं रचयति तटिद्बन्तं सख्या तिमिरपरिवृत्ते स्फुरनया स्फुरनानारत्ना भरणपरिणन्द्वेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निसेवे वरसन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तव आधारे मूले सहसमयया लास्य परया नवात्मानं वन्दे नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुदीस्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदं गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडेयछाया चूर्णसबलं चन्द्रशकलं धनुषौनासीरं किमिदमिति बध्नाति धिषणां धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनं स्निग्धं श्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसः वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथनवाटे विटपिनाम् वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकवरी भारतिमिरा
दिशां वृन्दैर्वन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिव्राह स्रोतः सरनिरिव सीमन्तसरणी अरालय स्वाभाव्या दलिकुलः सश्रीभिर्लके परितं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं धरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धो माद्यन्ति स्मरमथन चक्षुर्मधुलीयः ललाटं लावण्य द्युतिविमलवा भाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मुकुटघटितं चन्द्रसकलं विपर्यासन्न्यासात् उभयकृतसन्धानमयितः सुधालेपस्फूर्ति परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणे धनुर्मन्ये सव्ये तरकरगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहः सूते सव्यं तव नयनमरकात्मकतया त्रया मां वामं ते सृजति रजनीनायकममुं तृतीया दृष्टिस्ते दरदलितहेमाम्बुजरुचे समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीं विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलये कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ति दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवं तत्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तव कमकरन्दैकभरितं कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुचन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गा दलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गाराद्रा तदितरमुखे कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहेभ्यो भीता सरसिरुः सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जगति दृष्टे सकरुणा गते कर्णाभ्यरणं गरुतैव पक्ष्माणि ददति पुरा भेतुश्चित्त प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रा दरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मरसरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितनीलाम्बुजतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनः षष्ठुं देवान् नृण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्त्वं बिभ्र तम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रनेत्र अरुणधवलश्यामरुचिभिः
नदसोनो गङ्गा तपनतनयेते ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि संवेदमनगे तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषा सफरिका इमं च श्रीबद्ध्वा छदपटकवाटं कुवलयः जहाति प्रत्युषे निशिच विघटय प्रविशति निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमौदयं याति जगति तवेद्यायुः सन्तो धरनिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषा जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः दृघाद्राधीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च देहानिर्यता वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः अरालं ते पाली युगलमगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमसरकोदण्डकुतुकं तिरस्थिनो यत्र श्रवणपथमूलङ्घ्यविलसत् अपाङ्गाभ्यासङ्गो दिशति सरसन्धानधिषणां स्फुरद्गण्डा भोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्य द्रुह्य त्यवनिरथमरकेन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिरमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्याः सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यां विरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो झनत्कारस्तारे प्रतिवचनमाचष्टैव ते असौ नासावंश तुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नैदीयं फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तरमुक्ता शिशिरतरणि श्वासघटिता समृद्ध्यायस्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचे प्रवक्षे सादृश्यं जनयतु फलं वेद्रुमलता कबिम्बं दृग्बिम्ब प्रतिफलनरागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासी दतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्थे शीतांशोरमृतलहरीमम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि वृषं काञ्जिकधिया अविश्रान्तं पत्युर्गुणगणकथामृडनजला जपा पुष्पछाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनाया
स्फटिकदृक्छविमयी सरस्वत्या मूर्ति परिणमति माणिक्यवपुषा। रणे जित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्त्रे कवचिभिः निवृत्तश्चण्डांस त्रिपुरहरनिर्माल्य विमुखे विरिञ्चिन्द्रोपेन्द्रे शशिशिशिरकर्पूरधवला विलिप्यन्ते मातस्तव वदनताम्बूलसकला विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपते त्वयारब्धे वक्तुं स्खलितवचसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैर्पलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निवृतं कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया गिरिसेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राहं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथं कारं ब्रूमस्तव चिमुखमौपम्य रहितं भुजाश्लेषा नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवा धत्ते मुखकमलनालश्रियमियं स्वतः श्वेता काला गरुबहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यदहो हारलतिका गले रेखास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानद्व त्रिगुणगुणसंख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमानैव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौति वदने नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथमदमनान्धकरिपो चतुर्णां वक्त्राणां समभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतैर्नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु विधया हन्तकमलं यदि क्रीडलक्ष्मी चरणतललाक्षारुणदलं समं देवी स्कन्द द्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदा लोक्याशङ्का कुलिसहृदयो हासजनकः स्वकुम्भो हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजाव अमृतरसमाणिक्यकुतुपो न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात् विदितवधूसङ्गमरसो कुमारावद्यापि विरदवदनक्रौञ्चदमनो वहत्यम्बस्तम्भेर्मदनुजकुम्भ प्रकृतिभिः समारब्धां मुक्ता मणिभिर्मलां हारलतिकां कुचा भोगो बिम्बा धररुचिभिरन्तः सबलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरविजयिनः कीर्तमिव ते
तव स्तन्यं मन्ये तुहिनगिरिकन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतैव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद तव यत् कवीनां प्रौढानां जनिकमनीयः कवयिता हरक्रोधज्वाला बलिभिरबलीढेन वपुषा गभीरे ते नाभि सरसि कृतसङ्गो मनसि जः समुतस्थो तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमा बलिरिते यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृशे मध्ये किञ्चित् जननि तव तद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिवनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावरतः स्तनमुकुलरोमावलिलता निजावालं कुण्डं कुसुमसरतेजोहुतभुजः रते लीलागारं किमपि तव नाभिं गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य तनतटभरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेर्नाभो बलिसुसनकस्त्रुट्यतैव चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटनीतीरतरुणा समावस्थस्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्दः स्वीद तटघटितपुरपासभिदुरौ कषन्तो दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गा दुदरमलग्नं तनुभुवा त्रिधानद्वं देवी त्रिवलिलबलिवल्लिभिरेव गुरोत्तं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजां नितम्बदाच्छिद त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्ब प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलिम् उभाभ्याम् ऊरुभ्याम् उभयमपि निर्जेत्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्यो प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विजिगे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमपि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणसरगर्भो गिरिसुते निसङ्गो जङ्घेते विषमविशुखो बाणमकृत यदग्रे लक्ष्यन्ते दशसरफलापादयुगली नकाग्रच ज्ञानः सुरमुकुटशाणो घणिषिता श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यो शेखरतया ममापेतो मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ययोपाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मी अरुणहरिचूडा मणिरुचि नमो वाकं रूमो नयनरमणीयाय पदयो तवास्मि द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यन्तं यदभिननाय स्पृहयते
पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे वृषाक्तेत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्षणमितं ललाटे भरतारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मीलितवता तुलाकोटिक्वाणे किलकिलितमीशानरिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरितटाक्रान्तिचतुरौ निशायां निद्राणं निशि च परभागे च विशदौ परं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं तत्पादौ जननि च यतश्चेत्रमिह किं पदं ते कान्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भि कठिनकमटिकर्परतुलां कथं वा हस्ताभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदा दयन्यस्तं त्रिगदिदयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनुसमहनाय ददतो कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया यदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः चरन्तस्थे खेलं भवनकलहंसानुजहति स्वविक्षेपे शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितः स्वविक्षेपे शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितः छलादचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छछाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भाषां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रसैव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीशाभाचित्ते दृघदिव कठोरा कुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पितुरपि वरारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा समानीतः पद्भ्यां मणिमुकुरताम्बम्बरमणि भयादास्यादन्तः स्तिमितकिरणाश्रेणिमश्रिणः दधाति त्वद्भक्त्र प्रतिफलनमश्रान्तविकचं निरातङ्कं चन्द्रा निजहृदयपङ्केरुहमिव कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिकर्पूरैर्मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रेक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते
पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयो सपर्या मर्यादा तरलकर्णानां सुलभा तथापेते नीता शतमखमुखासेधिमतुलां तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमरा कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिकैरपि धने महादेवं हित्वा तव सति सतीनां चरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः स्वदेहोद्भूताभ्रीर्गृणिविरणिमाद्याभिरभितो निषेव्यां नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिनयतः महासंवरताग्नि विरचयति नीराजनविधिं गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदः हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमधृतनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगं गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदः हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमधृतनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनीं सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी समुद्भूतस्थूलस्तनभरमुरश्चारुहसितं कटाक्षे कन्दर्पा कतिचन कदम्बदुतिवपु हरस्य त्वद्भ्रान्तिं मनसि जनयन्ति अस्म विमला भवत्या ये भक्ता परिणतिरमीषामि यमुमे सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतिः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा चिरं जीवनेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरं परब्रह्माभीख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् निधे नित्यस्मेरे निरवधिगुणे नीतिनिपुणे निराघाटज्ञाने नियमपरचित्तैकनिलये नियत्या निर्मुक्ते निखिलनिगमान्तस्तुतपदे निरातङ्के नित्ये निगमय ममापि स्तुतिमिमां प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधि सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरर्घरचना स्वकिम्भो हेरम्बः प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधि सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरर्घरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो ध्वानमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन्
मुकुलितकरोतं समुकुटाम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।